अमन, Present, sir. अंशिका, Present, sir. अरुमिता, Present, sir. आर्यन, आयुष, Present, sir. भव्य भारद्वाज, Present, sir. भव्य मिश्रा, Sir, Aryan Sinha present. आर्यन सिन्हा प्रेजेंट, दमन, Present, sir. दमन प्रेजेंट, देवांश, दिशिता, Present, sir. गैलेक्सी, गौतम कक्कर, गौतम कुमार, हिमांशु, दिशिता प्रेजेंट, डन बेटा, दिशिता प्रेजेंट, डन। भव्य मिश्रा, Akshita present. अक्षिता प्रेजेंट, हिमांशु, जयंत, Sir, Gautam Kumar present. गौतम, कनक, Present, sir. कान्हा, कनक प्रेजेंट, कान्हा, कुंजल, Present, sir. कुंजल प्रेजेंट, लक्ष्य, Present, sir. लिनॉय, मानव, प्रज्ञा, Present, sir. with this, मानव, right, प्रज्ञा, ऋषभ, रोहन, साहिल बिष्ट, साहिल शर्मा, संकेत, संयम, शाश्वत, Present, sir. शाश्वत प्रेजेंट, शिवांश, Present, sir. श्रेया, Present, sir. सिद्धांत शर्मा, Present, sir. सिद्धार्थ जैन, सिद्धार्थ सेमवाल, Present, sir. सृष्टि, Sir, Himanshu present. यस बेटा, वानी, Present, sir. वंशिका, Present, sir. Sir, Vanshika present. ओके बेटा, हिमांशु प्रेजेंट, एनीवन एल्स जॉइन लेट बेटा, Lenoy present. Sir, Lenoy. Sir. लिनॉय के बाद हु इज दिस, Gautam Kakkar. गौतम कक्कर, एनीवन एल्स, ओके, एब्सेंटीज आर आकांक्षा, आरव ग्रेवाल, अग्नीश, देवांश, and Anshika also, Anshika, Devansh, Galaxy, Jayant, Kanha, Pragya, Rishabh, Rohan, Sahil Bisht, Sahil Sharma, Sanket, Sahil Bisht present, okay. Sahil Sharma, Sanket, Sayyam Kakkar, Siddharth Jain, Srishti, anyone else beta? Joined late and whose name in the absentee list beta? चलिए, हाँ जी बेटा, who's this? Sir, 11.2 का last question समझा दीजिए, question number 12. 11.2
11.2. Yes, sir. कल मैं पूछ नहीं पाया था. Okay. Last question. That is 12th vertex. This is from parabola, na beta? Vertex and passing through this Yes, and sir. symmetry. Okay, 1 second, beta. Doubt. Question number 12. Exercise 11.2. Vertex is at origin. Right. Passing through point. Passing point is 5, 2. And symmetric with respect to y-axis. Symmetric with respect to y-axis. Now, according to the given data, beta, now tell me which type of parabola is this? According to this beta. Vertex is given. It means it is a standard parabola, right? Passing point is given, which lies in first quadrant. And now symmetric with respect to y-axis, right? So we have to take a parabola which is symmetric about y-axis. So, yeah, so we have two type of parabolas which is symmetric about y-axis. That is x square equal to 4ay and x square equal to minus 4ay. And it means this is the downward parabola and this is upward parabola, right? Now we have to decide, because according to symmetry about y-axis, this can be either this or this, right? But they have given you a 1 point also, beta, 5, 2, right? And this is lying in first quadrant. So first quadrant आपका ये है. So here is your point, beta. According to the given situation, we have to take equation of parabola, this one. So solution is what? According to question, let equation of parabola be x square equal to 4ay, right? Now it passes through 5, 2. This implies we have to replace x by 5 and y by 2. So 5 square is equal to 4a and value of y is 2. So this is 25 equal to 8a, and this implies a equal to 25 by 8. Now putting in 1. So x square equal to 4 into 25 by 8y. Simplify x square equal to 4 to 25 by 2y. This is the answer, or we can solve it. 2x square equal to 25y, or we can write answer as this one. ठीक है, देखना बेटा, is this clear now? Sir. हाँ जी बेटा. सर x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 by 2 y. सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, मतलब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर, इसको आगे सिंपलीफाई करना होता है या फिर इस यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं? नहीं, आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. मैं ये कह रहा हूँ, देखो आपको लगता है कि सिर्फ 2 को क्रॉस करने से ये लिख सकते हो तो लिख दो, अदरवाइज ये भी आंसर करेक्ट है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस ऑल्सो करेक्ट. आप बस ये देखना कि इफ अ क्वेश्चन इज मैचिंग एग्जैक्टली विद एनसीईआरटी, तो आपको उसका एनसीईआरटी वाला आंसर जरूर मेंशन करना. ठीक है, यू हैव टू राइट द एनसीईआरटी आंसर आल्सो बेटा. ठीक है, यस. चले बेटा आगे चले. यस. Okay. Or any doubt in ellipse beta? Any question you want to discuss with me beta from the exercise 11.3? Any question? Shall we move to the next topic beta? Yes.
today also beta I'll give you the data only. The derivation portion will do later on, right? So first, the next conic is hyperbola beta. Hyperbola. So we have two types of hyperbola. Two types of hyperbola beta. One is, again we can say that it is ठीक है. We Sir, have available these. present. बेटा लेट हो बेटा अब तो आरव. And yesterday and last two classes you were absent. ठीक है भाई, तबीयत तो ठीक है आरव जी? Yes, sir. Okay. ठीक है बेटा. So we have the intersection point is known as equation of this hyperbola is x square minus y square by b square equal to 1. X square x square by a square minus y square by b square equal to 1. This is the equation of hyperbola. These 2 points are known as point of intersection is known as vertex. Sorry, vertices. In this case, this is vertices. This is also known as vertices. And coordinate of this is in first quadrant, so it is a comma 0 and minus a comma 0. Now, fixed point f1, f2. This is c comma 0, sorry, minus c comma 0, and this is positive c comma 0. Vertex, focus, right? So now in ellipse, this x-axis is known as major axis beta. In ellipse, what is the name of beta this x-axis? In ellipse, major axis. Major Right? axis. So, yes, so major axis. So in case of hyperbola, major axis is known as transverse axis beta. They have changed the name. This is now it is transverse axis, and the minor axis known as conjugate axis. Conjugate axis. ठीक है. और इसमें जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि any set of all point whose difference of the distance from two fixed point is constant. ellipse में क्या था बेटा? ellipse में क्या था बेटा? What was The sum of points is a constant. That sum of distance the is distances from two fixed point is constant. तो यहाँ पे क्या है बेटा? Sum of the difference of the distances from two fixed point is constant, right? So definition क्या है? The set of all points in a plane that difference of the distances from two fixed point is constant, right beta? Difference means if you are taking this point, distance of this, अच्छा ये difference मतलब difference of distance from the farthest point to the nearest point. ये नहीं कि आप इसमें से ये माइनस करो. आपको क्लियरली दिख रहा है, this is the longer distance and this is the lesser distance. So farthest minus the lesser one, that is your constant. Suppose I have taken this point beta, somewhere या यहाँ ले लेते हैं point, this distance minus this should constant. Or if we take this point, this distance minus this point, is this distance is equal to constant. So this is the definition of this one, right? Focus आपको दिख गया. यहाँ पे जो relation है A, B, C के बीच में, the relation between A, B, C क्या होगा बेटा? डिस्टेंस बताओ बेटा. relation, anyone?
उसमें क्या था इलिप्स में, याद करके बताओ मुझे। इलिप्स में व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन ए बी सी? सर 2a and 2. डिस्टेंस, रिलेशन बेटा, व्हाट वाज द रिलेशन मैम बिटवीन ए ए बी स्क्वायर सी? इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. A square equal to b square plus c square is in ellipse, right? Now in this case beta, it is a square equal to, here it is a, sorry क्या बोल रहे हो बेटा? A square plus b square equal to c square. C This is square. the, this is the relation beta, right? और ये सब चीजें एक बार थोड़ा सा जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे आया ये बताऊंगा, अभी सिर्फ आप इसको नोट करो, राइट? बिकॉज वो जो डेरिवेशन है दैट गिव्स यू अ मोर क्या कहते हैं क्या एक्सप्लेनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज ऑफ हाउ दिस वी हैव reached to this relation beta, a square plus b square plus c square. So one thing this you have to remember, eccentricity formula is same, c by a, ratio of c and a is known as eccentricity, right? And what another name is here? सर One is, हाँ जी बेटा, सर यहाँ पे रेशियो ऑफ सी अपॉन रेशियो ऑफ ए, सर ये ओरिजिन से लिया है जो उसका क्या? डिस्टेंस. हाँ बेटा, ये जो C आपका इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी? इसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स. तो सेंटर तो ये रहा बेटा, सेंटर ऑफ द इलिप्स, इलिप्स के Yes. केस में तो यहाँ पे हाइपरबोला हो गया बेटा, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला टू वन ऑफ द फोसाई, कोई सा भी एक फोसाई ले लो, एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेस, कोई सा भी एक वर्टिसेस ले लो बेटा, ठीक है ना? तो C बाई A. तो आप Yes. यहाँ केस में देखो बेटा, हमारे पास तीन चीजें होती हैं, E इज इक्वल टू 1, E इज ग्रेटर देन 1, E इज लेस देन 1, ठीक है? इफ E इज ग्रेटर देन 1, दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन, इफ इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इट मींस दिस इज हाइपरबोला, हाइपरबोला. राइट बेटा? आपको दिख रहा होगा C बाई A is more than, C is more than A बेटा, डिस्टेंस, राइट? तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1. और आपने जब इलिप्स देखा होगा तो उसमें आपके पास वर्टिसेस यहाँ थे और फोकस यहाँ था, तो उस केस में लेस देन हो गया. E इक्वल टू 1 किस में होता है बेटा? इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 किस में होता है? सर्कल. सर्कल, वेरी गुड. सो दिस इज अ क्वेश्चन, इफ E इक्वल टू 1, दिस इज सर्कल, if E is greater than 1, this is hyperbola, and when E is less than 1, then this is a ellipse, this is an ellipse beta, right beta? Yes. Right? And the second equation, second hyperbola is vertical, this is horizontal, and second one is again like this beta, ठीक है? So in this case, this is your transverse axis, this is your conjugate axis, right? And equation in this format is x square by b square minus y square by a square is equal to 1, right? So this, in both the cases a square is greater than b square, a square is greater than b square, ठीक है? वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको इसी से पता चल जाएगा. इफ योर दिस पोर्शन, अभी मैं क्वेश्चन से क्लियर करूंगा, वैसे तो इनको ध्यान रखो. आई विल गिविंग यू दी दैट टेबल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस. मैम सर हाइपरबोला में कि सर लैटिस रेक्टम होगा ना? हाँ, लेटेस्ट रेक्टम तो बेटा दोनों में ही होगा. और लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन क्या थी बेटा? अ लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू दी, बोलो बेटा, लाइन सेगमेंट, हाँ, one of मतलब This is perpendicular to the transverse axis, transverse axis and whose endpoints lie on that lie on endpoint hyperbola. on the hyperbola, right beta? So definition is same. If they are asking write the definition of latus rectum of hyperbola, so you have to write in the last beta, in the last you have to write whose endpoints lie on hyperbola. If they are asking definition of latus rectum of ellipse, then you have to change the word hyperbola with ellipse. If they are asking latus rectum of parabola, then change the word ellipse with
पैराबोला। ठीक है ना, तो वो डेफिनेशन में बस आपको वो वर्ड चेंज कर देना है, मीनिंग सबका एक ही है, अ लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द फोकस, राइट, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो आपका पैराबोला में एक्सिस था, एलिप्स में मेजर एक्सिस, हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस, right, and whose end points lie on the hyperbola. For hyperbola case, end points lie on the ellipse for ellipse case, and end points lie on parabola for parabola case. ठीक है बेटा, आर्यन ठीक है बेटा, is this clear? Yes, sir. Okay, now I'm taking both the Sir, cases. हाँ जी सर मेरे को एक और डाउट था सर, अगर हाइपरबोला में सर ए इज इक्वल टू बी हो गया तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? बेटा, see, if we have x square equal to a square minus y square by a square equal to 1, क्योंकि आप बोल रहे हो a equal to b, then this is known as equilateral hyperbola. इसका नाम है बेटा equilateral hyperbola. ठीक है, ये कंडीशन जरूर मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, कहीं पे देखना बेटा, दिस इज मेंशन्ड समवेयर, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत रेयर है बेटा, अदरवाइज दिस यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ कोनिक बेटा, दिस इज बेसिकली यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ कोनिक. ठीक है, सो देखते हैं रिवीजन टाइम पे, अगर कुछ आपको जितना टाइम मिलेगा, आपको डेट शीट मिल गया आई थिंक 23rd से है ना बेटा, तो इन बिटवीन इफ यू फाइंड 22 से, एंड आई थिंक मैथ्स का 26 से 27 आई थिंक, राइट, मैथ्स को 28 को है, 28 को, राइट राइट. सो अगर टाइम मिलेगा और आपका इंटरेस्ट होगा तो बेटा, अगर आप चाहोगे तो एप्लीकेशन भी डिस्कस कर, हाँ ठीक है ना. चलिए, आई एम टेकिंग नाउ दैट टेबल बेटा. सो फर्स्ट हमारी वन फाइनल इज, एग्जाम के बाद क्लासेस नहीं होंगी फिर? फाइनल के बाद आपका 12 चालू हो जाएगा बेटा, जैसे ही आपका फाइनल एग्जाम सर हुए. फिर उसकी बिगिनिंग में करा देना ना. हाँ, जैसे आपको नहीं, देखो बेटा, जब 12th का सिलेबस चालू हो जाएगा तो वी हैव टू गिव अ वीकली रिपोर्ट दैट व्हाट वी हैव डन इन फॉर 12th सिलेबस. सो वी कैन डू, अगर आपका जैसे एग्जाम के बाद रिजल्ट और उसके बीच में गैप होगा तो आप मुझे मैसेज करना, जो भी आप 5-7 बच्चे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो मैसेज करना, और जो भी टाइमिंग की सिचुएशन होगी, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा तो ऑनलाइन डिस्कस करेंगे, और अदरवाइज आई कैन कॉल यू इन द स्कूल इफ स्कूल विल रीओपन बेटा. ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं एक बार डिसाइड कर लेना कि दैट थोड़ा सा हमें सीबीएसई लेवल से अप जाना है. ठीक है, तो अगर आप करना चाहोगे तो बेटा मैं आपके साथ हूँ, रादर मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई इस तरह की चीजें करे तो मेरा भी कुछ रिवाइज हो जाए. ठीक है, बट पिछले 2-3 साल से तो इस तरह की सिचुएशन हो ही नहीं पा रही है. बट अगर आप चाहते हो स्कूल ओपन हो जाते हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, विच एवर प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल बेटा, उसमें आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है नहीं पढ़ना. जैसे मेरा सजेशन है कि बाइनोमियल जरूर करना एक बार, बिकॉज वो आपके जेई में है और लाइफ में बहुत काम आता है, जब तक आपके पास मैथ्स रहेगा वो आपको बहुत यूजफुल है बेटा. ठीक है, तो आप लोग बताना मुझे, हमारा जैसे भी मैथ आप, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? देखो कंटेंट वाइज तो आज खत्म हो गया, आज हाइपरबोला बताना है, हाइपरबोला आज आपको कंप्लीट हो गया. ठीक है, अभी हमारा कोई टॉपिक बचा तो नहीं है कोनिक के बाद, एनीथिंग लेफ्ट बेटा बताओ. नो सर. नो सर. ठीक है, तो कंटेंट वाइज खत्म हो जाएगा, देन वी हैव टू जस्ट प्रैक्टिस सम गुड क्वेश्चंस, और आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंगली मैं आपकी जो भी रिवीजन है, आपके डाउट हैं, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे उनके वर्कशीट में प्रॉब्लम है, तो वी विल डिस्कस दैट दोस थिंग्स बेटा. और आपको अगर ये डेरिवेशन चाहिए सबकी, तो विल डू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल द डेरिवेशन बेटा. तो ऑफिशियली विल कंप्लीट टुडे सिलेबस, राइट. तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो भी है वो आपका डेरिवेशन या किसी चीज का फॉर्मूले का या और कोई कॉन्सेप्ट आपको नॉलेज डेप्थ में जाना है तो वो आप डिस्कस मतलब कर लेंगे क्लास में, जैसे आप बोलोगे. ठीक है, ठीक है बेटा, बोलो. यस सर, ठीक है. yes sir. Okay बेटा, आई एम टेकिंग both the parabolas, one is horizontal and one is vertical, right. Equation of this is x square by a square minus y square by b square equal to 1, and condition between this is ABC is this, and here it is x square by b square minus y square by a square equal to 1,
Same condition, b square is equal to c square. Now in question, what point they are asking? I'll write all those points. Like in first question, they're asking find the coordinate of foci, vertices, length of sorry. Uh, so first question 11.4 coordinate foci, vertices, eccentricity, length of latus rectum. Okay, right. So first thing is center beta. Center सबका हमारा origin है बेटा, because we are learning only standard form. This is center. Next is vertices. Vertices means this point. So in this case, vertices is plus minus a comma 0, and in this case it is 0 plus minus a. Vertices is done. Then foci. Foci is plus minus c comma 0, and in this case 0 plus minus c. Foci. Then next they are asking foci, vertices, eccentricity, E. E in both the cases, C by A. Right? Now, length of a transverse axis. Length of transverse axis. Here is 2A. This is also 2A. Then length of conjugate axis. This is 2B. This is 2B. And then length of latus rectum. Length of latus rectum. जो आपका एलिप्स में था बेटा वही यहाँ पे है. एलिप्स में 2b स्क्वायर बाई a and here also 2b square by a, because almost निकालना में यहीं से लेंथ ऑफ latus rectum, तो तरीका वही है, वैल्यू भी सेम आएगी. और क्या होता है इसके अंदर, 1 सेकेंड बेटा. वर्टिसेस वी हैव डिस्कस, latus rectum and eccentricity we have done, conjugate. Okay, सर so इक्वेशन these are डायरेक्ट्रिक्स. हाँ जी एक वो भी रह गया. यस बताओ बेटा. इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, सही बोला आपने. इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. तो आपके इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ है बेटा? एक्स एक्सिस पे. y इक्वल टू 0 हो जाएगा सर y फर्स्ट is equal केस. to 0 when x is equal to 0. और इसमें x इक्वल टू 0. और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. नहीं कुछ गलत कर दिया हमने. देखो कुछ गलत किया बेटा. नहीं सही किया. ठीक है सही है. सर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसमें नहीं है बेटा. हमारे मतलब यहाँ नहीं है. Okay. इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा. ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. हाँ जी बेटा बोलो. अरे सर इस किस्म सर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का कोई मीनिंग आएगा क्या सर? मीनिंग नहीं, कॉन्जुगेट एक्सिस ये है बेटा, और इसको हम थोड़ा डेरिवेशन में करेंगे कि कहां तक लेते हैं. जैसे ये तो पूरी y एक्सिस जा रही है, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट वो हमें डिसाइड करना है, तो वो हम डेरिवेशन में सीखेंगे. अदरवाइज क्वेश्चन में तो b आपको दिया होगा. ठीक है, जब हम डेरिवेशन करेंगे तो b को हम डिसाइड करेंगे. वहां पे b की जो वैल्यू है वो मुझे इसके हिसाब से डिसाइड करनी है. इफ a की जो लेंथ है उसके हिसाब से डिसाइड करनी है. तो वो थोड़ा डेरिवेशन में क्लियर होगा. मुझे अभी लग भी नहीं रहा कि मैं किस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ b को. ठीक है, थोड़ा सा करेंगे इसको हम, थोड़ा सा इसका डेरिवेशंस को थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा फील ठीक नहीं होता कि जब तक मैं आपको इन चीजों की डेरिवेशन ना बताऊं. चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेटा. 11.4. Okay, exercise 11.4. I'm taking question number 1. Question number 1 beta. In this question, my question is x square by 16 minus y square by 9 equal to 1. ठीक है बेटा? This is the. Now, which type of hyperbola is this?
So it is horizontal hyperbola. हॉरिजॉन्टल कैसे पहचाना बेटा आपने? सर मैंने कुछ गलत डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर बड़ा ऐसे डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के। एक सेकंड बेटा, मैंने कहीं पे कुछ गलत लिखा है। ये रहा हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन। एक सेकंड बेटा, मैंने ये गलत लिख दिया, अदरवाइज डेटा रॉन्ग हो जाएंगे। आई राइट वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये होता है बेटा। सॉरी, मैं थोड़ा एलिप्स के उसमें रह गया। और यहाँ पे भी इट इज, इसको प्लस कर देते हैं, राइट बी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस बेटा। सॉरी, मैं थोड़ा एलिप्स के हिसाब से ले गया इसे। ठीक है, चलो। सर वहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा। Yes, sir. हाँ, ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर। बेटा अपने नोट्स में ना थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना है, एंड दिस विल बी यूज्ड इन क्लास 12th आल्सो। तो थोड़ा सा अपने नोट्स ऐसे बना के रखना कि व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड दीज पॉइंट ना, यू आर एबल टू सी दिस थिंग्स इजीली। जो हमें सिर्फ यही सीबीएसई में 12th में चाहिए बेटा। मैंने जो आपको डेटा दिया है, गिवन यू फॉर सीबीएसई पर्पस ओनली। ठीक है, if or I don't think I have not remember anything more than required, anything more required। ठीक है, मैंने all required data I have given you related to CBSE portion। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं पहले। now it is related with x square by a square minus y square by b square equal to 1। so this implies a square equal to 16, b square equal to 9, right? And this implies a equal to 4 and b equal to 3, and we have a relation a square plus b square equal to c square। so 16 plus 9 equal to c square equal to 25, value of c is 5। now the first thing they are asking beta, in the first case they are asking find the coordinate of foci। so coordinate of foci are plus minus c comma 0 for horizontal parabola, hyperbola। so it is plus minus 5 comma 0। second thing they are asking vertices means plus minus a comma 0। so this is v plus minus 4 comma 0। next thing they are asking eccentricity, e equal to c by a, and value of c is 5 and value of 4 is 1, a is 4। so this is clearly visible, it is greater than 1, right? now next is latus rectum। so length of latus rectum is equal to 2b square by a। so 2 into b square is 9 by a is 4, so it is 9 by 2। इसी केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी देख लेते हैं क्या है। ट्रांसवर्स एक्सिस it is 2a means 2 into 4 8, so you have to write unit। इसमें भी यूनिट लिखना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में। लेंथ ऑफ conjugate axis, it is 2b, 2 into value of b is 3 which is 6 unit। ठीक है, so this is question number 1। next we'll take question number 2। question number 2 is y square by 9। पे कर दीजिए सर। सॉरी, 5 और 6 में से। हाँ अभी लेता हूं मैं y, एक मिनट इसको और लेते हैं। y square by 9 माइनस x square by 27 equal to 1। now this is of second type beta, y square by b square minus x square by a square equal to 1, right beta? we have to compare it with the second type, this is vertical one। so this implies b square equal to 9, a square equal to 27, b equal to 3 and a equal to what beta? root 27। root 27 is 3 root 3, correct है देखना बेटा। 27 3 root 3, correct। now condition we have a square plus b square equal to c square। so a square is 27, b square is 9, c square equal to 36, this implies c equal to 6। so we have c
नाउ हमें क्या बताना है बेटा? वी हैव टू टेल दी फोकस, फोकाई मतलब क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट बेटा? 0, प्लस माइनस सी, विच इज एफ 0, प्लस माइनस 6. Vertices 0, plus minus a in this case. So it is 0, plus minus 3 root 3, or you can write root 27. Next they are asking eccentricity equal to c by a. Value of c is 6. Value of a is 3 root 3. Simplify 6 root 3 by 9. So it is 3 and 2. So 2 root 3 by 3. Next आ जाते हैं length of latus rectum, which is 2b square by a. So 2 into b square value is 9 by a is 3 root 3. So 18 by 3 root 3, root 3 by root 3, 18 root 3 divided by 9. So 9 से cancel 2 root 3. This is unit. ठीक है? And बस यही पूछा है इसमें इन्होंने. Now you're saying that question number 5. Question number 5 will take beta. In question number 5, we have 5y square minus 9x square equal to 36. So first we have to convert this in standard form beta. For that we have to divide by 36. So 5y square by 36 minus 9x square by 36 equal to 1. So this is y square by 36 upon 5 minus x square by 4 is equal to this is 1. देखना बेटा करेक्ट है ये? बोलो बेटा, is this correct? Calculation is correct बेटा? Anyone beta can reply? Is this calculation is correct? Yes, sir. Right, now this is related with which one beta? First type or second type? Vertical, sir. Vertical hyperbola. हाँ जी. So a square equal to what beta? Value of a square is what? Four. A square की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4. यार मुझे क्यों लग रहा है मैं बार बार कुछ गलत बता गया हूँ. रुको एक सेकंड, एक बार सेकंड का आंसर चेक करते हैं. कहाँ गया सेकंड? क्वेश्चन नंबर 2. मुझे क्या गड़बड़ की है मैंने? एक मिनट रुको, डेरिवेशन नहीं किया ना, इस वजह से डायरेक्ट लिखने में गड़बड़. 9/2 ट्रांसफर 6 is table table is there, x square by a. सर आपने गलत लिखा सर. एनसीईआरटी में दे रखा सर y square by a square minus x square by b square is equal to 1. Which one? Second type beta? Yes sir, vertical का y square by a square minus x square by b square is equal to 1. एनसीईआरटी में सर मतलब डिपेंड करता है कि आप जो उसकी मेजर एक्सेस किसको ले रहे हैं सर. वो लेने को तो सर किसी को भी ले सकते हैं. नहीं, ले किसी को सकते हैं, लेकिन मैंने जो डेटा दिया है ना मुझे उससे रिलेट करना है. एक मिनट रुको बेटा. आई हैव टेकन मेजर एक्सिस वर्टिसेस प्लस माइनस ए, और मेरा यहाँ पे वाई एक्सिस में है, और फोकस आपका हो गया ई बाई ए. मैंने लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 2a लिया है. ओके हाँ. सर फिर तो सर अगर आप माइनस में लेंगे ना सर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो सर नीचे फिर 0, प्लस माइनस b आएगा. हाँ वही है ना, मैंने जो लिया, क्योंकि देखो मैं आपको सेम बताना चाहता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ये चीजें सेम रखना चाहता हूँ मैंने, इसीलिए डेटा इसलिए बताया आपको. ये चीजें सेम रहनी चाहिए. अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो मेरा ये क्वेश्चन सही में मैंने रॉन्ग लिखी बेटा. दिस इज वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है. क्या लिख दिया? ये बी स्क्वायर. ठीक है बेटा.
मैं इस टेबल को, इस वाले पेज को दोबारा से लिख के सेंड करूंगा आपको, ठीक है। ये वाला पेज मैं आपको दोबारा से लिख के भेजूंगा, मैंने आपको 2 बार गलत बता दिया। दिस इज अगेन वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। तो ये आंसर गलत आ रहा होगा, इसका मतलब फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा देखो ना, एक बार चेक करना। यस सर। आंसर रॉन्ग है ना बेटा मेरा आंसर एनसीईआरटी का? क्योंकि आप किसी भी तरीके से करो बेटा, आप जैसे आप कह रहे हो कि आपने यहाँ प्लस माइनस बी लिख दिया, आंसर तो सेम आना चाहिए ना। वी शुड हैव आंसर सेम बेटा इन दैट केस, ठीक है। सो मेरा ये, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। नाउ दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बिकॉज, चलो इसी में आ जाएगा अब आपका। मैं अब यहाँ पे इसे करेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आई एम टेकिंग, दिस इज ए स्क्वायर and this is b square. This is related with the second type, which is y square by a square minus x square by b square equal to 1. ठीक है। And in this case now a square is 36 by 5 and b square is 4. So a value is 6 by root 5 and b value is 2. Then a square plus b square is equal to c square. This implies 36 by 5 plus 4 equal to c square. 5 4 is 20. So 56 by 5 c square. And this implies c equal to root 56 by 5. Root 56 by 5. And 56 का रूट सॉल्व होता है कुछ 2 रूट 14 होता है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर चेक करते हैं बेटा। नाउ वी हैव a equal to 6 by root 5, b equal to 2 and c equal to 2 root 14 by root 5. This is the value of c. So now focus, which is in second case it is 0 सर plus एक बार minus. लास्ट पेज शो कर। हाँ बेटा एक मिनट, ये देख। ठीक है, ओके। Now the coordinate of focus is 0 comma plus minus twice root of 14 by 5. बट एक बार चेक करना फोकस करेक्ट है, देन वी आर ऑन राइट ट्रैक। आज बड़ी गड़बड़ी Yes, sir, हुई correct. है। Yes, sir. The foci is right, sir. Now vertices is 0 comma plus minus a. So v 0 comma plus minus a is 6 by root 5. And next thing they're asking eccentricity, I think. Third thing is eccentricity. E is c by a. Value of c is 2 root 14 by 5 divided by a is 6 by root 5. Root 5 cancel. We have 2 root 14 by 6, 2, 3. So root 14 by 3 is the value of eccentricity. Now length of latus rectum they're asking, which is 2b square by a. So 2b square is 4 and a is 6 root 6 by root 5. So it is 8 by 6 root 5 is, so 6 is 2 3 and 2 4. So finally 4 by 3 root 5 unit. This is the length of latus rectum, right? So please check better whether we have got the correct answer this time, because in question number 2 we have done all wrong better. Yes, sir, correct. By mistake we have done wrong. ठीक है, चलिए अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 we have time na beta till 12:45 we have a time na beta. You have next class na beta, which topic, which subject class you have beta? So physics. Physics, sir. 12:50 है हाँ बेटा, 2 मिनट और लूंगा बस आपके। इन क्वेश्चन नंबर 7 vertex is plus minus 2 comma 0 and foci is plus minus 3 comma 0. So this is a equal to 2 and c equal to 3. We have relation a square plus b square equal to c square. So using this 4 plus b square equal to 9.
b square equal to 5, and this implies b equal to root 5. So they are asking equation of hyperbola. So this data belongs to horizontal hyperbola. So horizontal hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1. So x square by a square is 4 minus y square by b square is 5 equal to 1. This is my answer बेटा. ठीक है. एक और जो सेकंड टाइप का वो लेते हैं. देखो वर्टिसेस इन क्वेश्चन नंबर 8. सर एक बार लास्ट पेज फिर से शो कर दो. हाँ जी बेटा देखो v is equal to plus minus 2 comma 0. So this is the plus minus a comma 0 plus minus c comma 0. So value of a is 2, value of c is this, relation between a b c is this. So from this we have, right? Now in second case, question number 8, vertices is 0 plus minus 5 and foci is 0 plus minus 8. So a value is 5 and c value is 8, and this is in our mind that this is of second type hyperbola. This is in our mind that this is of second type hyperbola. So a square plus b square plus c is equal to c square implies 25 plus b square 64. b square equal to 64 minus 25. कितना होगा बेटा ये? 36 I think. नहीं, this will be 39 I think. b square equal to 39. So this is b equal to root 39. ठीक है. Now ellipse की इक्वेशन हो गई y square by a square minus x square by b square equal to 1. Right? So value of a square. This implies y square. Value of a square is 5. Sorry, 25. Minus x square by b square. B square is 39. Is equal to 1. This is my answer. ठीक है. चलो कोई बात नहीं. आज आप ट्राई करना. Concept we have given you. Only derivation of ellipse and hyperbola is left. So concept wise, content wise, we have completed, and miscellaneous is the application बेटा. तो because CBSE के जो syllabus में थोड़ा doubtful है, तो मैं ये exercise miscellaneous exercise छोड़ रहा हूँ. मतलब हम लोगों ने नहीं कराई 11th class में. ठीक है. So today we have completed the content syllabus of mathematics content wise, especially in conic section. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ डेरिवेशन और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे. अभी 1 सेकंड बेटा होल्ड करना. 1 सेकंड. ओके, नाउ यू मे लीव इट. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. यस बेटा. Yes, sir. I sent you a question. Can you just explain it here as orally? बेटा in that question they are applying the C and D formula, trigonometric C and D formula, after applying the componendo and dividendo. Like componendo dividendo says if we have mn, m by n, so m plus n upon m minus n. This is componendo dividendo. And m by n, if somewhere required, I can apply this also. Sorry. Sir, +1 -1 केस नहीं होता था componendo dividendo? नहीं बेटा, वो तो मैनिपुलेशन होता है. अगर आप कर रहे हो कहीं पे, तो अगर आपको लगता है कि m by n है +1, ठीक है, और आप अगर ऐसे कर रहे हो m by n तो -1, ठीक है, वो अलग केस है कि आप कुछ अपनी तरफ से मैनिपुलेशन कर रहे हो. कॉम्पोनेंट डिविडेंडो तो यही है बेटा. इन न्यूमरेटर ऐड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में आपको मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में ये डिफरेंस करना है. ये इसका मीनिंग होता है. Yes, sir. ठीक है. चलो रिवीजन Yes, टाइम में sir. कुछ क्वेश्चन इससे पूछना बेटा, ताकि हम लोग इस पे भी कंसेप्ट कर लें. आप जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, वही क्लास में करवा लेना एक बार. ठीक है. Okay, sir. ओके. Thank you, sir. ओके बेटा, बाय. Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम. Thank you, sir. वेलकम बेटा.
when the bucket is filled with water. Yes, because the length changes. I hope. Ma'am, level decreases, frequency changes. Level